Hello, Assalamualaikum. We are finally back with an other live stream. आगे हैं हम एक और नई लाइव स्ट्रीम के साथ, वो भी हॉगवर्ड। समझा करो यार बात को। हॉगवर्ड लेगेसी या पता नहीं लेगेसी। हाँ, लेगेसी लेगेसी लेगेसी। हम आ गए हैं एक और नई गेम गेम वीडियो के साथ। गेम वीडियो नहीं, एक नई गेम के साथ आ चुके हैं, सही है। तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करने हैं। तुम लोगों को पता होना चाहिए यार, रोज़ा रखा है, रोज़ा रखने के बाद बंदे में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि लाइक चीख चीख कर एनर्जेटिक बोले, यू नो। हम पूरी स्ट्रीम वगैरह करेंगे, ठीक है। और तुम लोगों ने भाई को सपोर्ट करना है, जिस तरह भी करना है, लेकिन करना है ज़रूर। एंड वेल वेल देखते हैं क्या बनता है। एक तो बैक फोन का थोड़ा सा इशू वगैरह है, बाकी सब अच्छा ही अच्छा है। सब अच्छा ही अच्छा है। अलैको वस्सलाम, अलैका या नबी हबीबी या मोहम्मद। देखते हैं जी हमारा बोटल नेक करता है कि नहीं करता। एफएस वगैरह और हम ऑफ करेंगे और लोअर सेटिंग पे की खेलोगे। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा दुरूद शरीफ सारे पढ़ो इसके ऊपर। सारे 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 पढ़ो। Press any key to start. अबे ये क्या हो रहा है पैन की फिर, मैंने तो कुछ किया ही Mouse नहीं। right button. Settings. ये किसने ओपन Additional exit game. Exit your game session. Tom Toretto. अबे Hogwarts यार grounds. ये क्या पैन की Additional content. Mouse right button. Window mode. Sound effect. Display subtitle. Mute all. Display subtitle. Mono audio. Display subtitles. Mono audio. अबे ये क्या हो User रहा interface option. Menu reader voice. Menu reader. Menu reader. Menu reader voice. Menu reader. है पैन की सेटिंग मैंने कुछ किया है नहीं है, वो अपने आप ही बोली जा रहा है। मेन्यू रीडर वॉइस, मेन्यू रीडर वॉइस। कमाल नहीं हो गया।
हमने अभी FSR ऑफ कर दिया है, FSR ऑफ कर दिया है। इंस्टाग्राम की मैं लिंक दे रहा हूँ, सारे जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, सही है। वैसे भी एक दो बात ना भी की तो भाई लो। बड़े ग्राफिक्स बंदे आ रहे हैं। लोडेड हो रहा है, क्या सीन है? हाँ ना, लोडेड, आहिस्ता आहिस्ता लोडेड हो रहा है। चलो वेल, जो भी हमारा हॉगवर्ड, ओए ओए हैरी। Revelio. समझा करो बात को। I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. ओ तेरी बहन दी तेरी, ओ ओ। Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can... अरे यार हद हो गई, किधर गया? Reparo. यार ये जुड़ा ही नहीं है, हमारा जादू काम ही नहीं करता। 2 नंबर जादू है, आई थिंक सो, है ना? पीछे हट जाओ, पीछे मैंने रेस लगाई हुई है। ग्राफिक्स में I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. अभी फिलहाल गॉबस्टोन्स को छोड़ो, जो काम है वो करो। Who is this waiting? Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Sebastian. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. भी चलोगे तो दिस वे होगा ना, अगर चलोगे तो There's a नहीं, secret कैसे passage तुम्हारे just पीछे here. जाऊंगा? कोई It's well disguised. भैया क्या करो? सेबेस्टियन, अच्छा जी, F अनकॉफ क्यों नहीं हो रहा? व्हाट? जादुई दुनिया। How did you find this place? I don't know. Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Revelio. अच्छा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है तेरी, मैं बातें सुनूं, मैंने गेम मिशंस भी कंप्लीट करने हुए हैं ना। Lumos.
daily. Rumor. Revelio. Never been caught. जाना उसके पास ही है. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Legacy, that A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Okay. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. लो जी हमारे पास एक नया अनलॉक हो गया है. You're getting it. Ready to actually try it out? जादू वाली शक्ति अनलॉक Stick हुई to है. the targets though. Best to keep the इसको हम के कौन सा था, ये वाला था. इसको रखते हैं नंबर 4 की जगह पे. नहीं, हाँ tact. नहीं, 2 की जगह एक दफा रखते Have a go हैं. at those can. इसको इधर रख लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं और इसको. Both have their uses, but I think Expelliarmus! that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Okay. Incendio. इसको कुछ होते रहा नहीं. ऐवे मुफ्त खाते. Levioso! Accio! Expelliarmus! i7 4770 सुपर कैसा होगा ब्रो? मैंने बोला उस दिन भी आपको बताया था, मैंने कहा था बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है यार. i5 को अगर i5 लेते हो ना 4th जनरेशन में भी भाई उसको भी काट जाता है, और इसके ऊपर भाई आपको गेमिंग भी एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा. और जो समथिंग अभी मुझे यहाँ पे 60 लो का आ रहे हैं ना, इवन कि मैं लो सेटिंग्स के ऊपर खेल रहा हूँ. ये है कि आपको जो आपकी वैसे एलईडी के ऊपर डिपेंड है. अगर मैं वी सिंक ऑफ करता हूँ तो भाई साहब फिर खुद ही देख लो आपको कितने एफपीएस वगैरह मिलेंगे. गेमिंग के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से ज़बरदस्त है. Expelliarmus! यार क्यों नहीं इसको कुछ हो रहा? अजीब होगी. Accio! या मैंने कोई गलत लिया हुआ है. वही ना, मैंने ही चीज गलत ली. Confringo! Nice work. How's it feel? That's it! बड़ी हैवी. I think I've got it. Done.
देखा मुझे पता I था have to मतलब say, something मैंने ही I गलत enjoyed की है. that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. करते To हैं this इसकी day, क्वालिटी वगैरह भी there's हाई करके something about देखते हैं that हमें spell that's समथिंग addictive. कितने FPS मिलते हैं इसके ऊपर भी almost too okay it's almost too much. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. देखते हैं क्या बनता है अभी आगे इसको सच तो बता दिया हमारे पास स्टार्टिंग में एक ही होती है लाइक वो गॉब्लिन होता है Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? No. How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. यार हमें देखो धमकियां लगा रहे हैं You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. बस थोड़ा सा उसकी Sebastian is going to get an थोड़ा सा earful मसला about है this. जब हो जाएगा तो यार आप लोगों को पता चल जाएगा एड्स वगैरह चलनी स्टार्ट हो जाएगी अभी नहीं थोड़ा सा मसला वगैरह आ रहा है मोनेटाइजेशन के अंदर बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा यहाँ पर कहाँ पर जाना था मैंने
किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? मुझे लगा लो जी 4-5 FPS। भाई ये मीडियम के ऊपर चला रहा हूँ, चेक करो। अगर रिकमेंडेड रिसोर्सेज के ऊपर चला रहा था, लेकिन चेक कर लो, अगर आपके पास हॉगवर्ट्स लेगेसी है तो भाई आप ये मैं कहता हूँ सुकून से खेल सकते हो। हाई पे भी मैंने चलाई हुई है, अल्ट्रा के ऊपर भी चलाई है। अब मुझे बता सकते हो मैं किसके ऊपर ये चलाऊं? हॉगवर्ट्स लेगेसी मींस टू से ये आपके पास पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी है? Revelio. यहाँ पर कोई खजाना वगैरह नहीं पड़ा हुआ? Expelliarmus. Confringo. कोई खाता नहीं है यार। चलो खैर, नो यार मैं भी बस जिसे कहते हैं कि तुम लोगों की ये करता हूँ सारी गेम्स वगैरह डाउनलोड। अभी रिसेंटली द लास्ट ऑफ अस आई है, वो काफ़ी सारे किए हैं यूट्यूब के ऊपर, उसकी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह चल रही हैं, और वो भी मेरे पास पड़ी है, उसके ऊपर भी मैंने बेंचमार्क वगैरह किया है, वो भी चेक करना। लेकिन वो बहुत ही हाई गेम है, वो समथिंग लगा लो लो सेटिंग्स के ऊपर चला रहा हूँ, वो भी FSR 2.0 के ऊपर, ये लगा लो। हैवी से हैवी यार भाई। Forgive me, the headmaster भाई यार stopped प्लीज me काइंडली and से लाइक कर दो यार। Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. प्लीज काइंडली से लाइक कर दो। गेम बहुत मजे की है। लाइक ये है कि किसी को इंग्लिश आती हो ना थोड़ी बहुत, मुझे अब इंग्लिश की थोड़ी बहुत तो समझ आती है, बस उसी से हम काम वगैरह चला देते हैं, इतनी भी ज़्यादा तो नहीं आती है, पता है तुम लोग। भाई मैंने लाइक भी कर दिया है, शेयर भी कर दिया है। थैंक यू थैंक यू। This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, Revelio. where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. ये समथिंग पार्ट 5 का या 6 का है ये वाला से। There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. जादू भाई
जादू को स्क्रॉल्स। जी हाँ, ये किस पार्ट में होता है ये वाला जहाँ Cast पर Evanesco on ड्रैगन ये those पूरा chairs. जला देते हैं? हैरी पॉटर, हरमानी और दूसरा वो क्या उसका ब्राउन सा होता है उसके पीछे लग जाता है, ये पूरा ही जल जाता है। अभी टी दबाना है, ये इसको यहाँ पर रखना है और इसको यहाँ पर रखना है। Excellent work. Oh, You'll note that you are now in भाई। possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. चलो let's go। Where in Merlin's name is that elf? हैवी बाबा जी, हैवी सी। ये क्या है? Is that goodness? Are you waiting for okay? Where that had got to. I can't believe it's still प्रोफेसर here. वेजली क्या I'll कह just रही take हैं? a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. आप सो जाओ, आपको नींद आ रही है। नहीं ब्रो, मुझे नींद नहीं आ रही है। वैसे नींद भी तो आ रही है, ये कि रात को मैं सोया नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं क्या बनता है अभी। जी तेरी मेरी जान निकाल दी। एक्सप्लोर द रूम रिक्वायरमेंट, ओके। Confringo! Revelio! Confringo! क्या बात। Hope this isn't as precarious as it looks. यार Stop them! Revelio! No, not. That's not helpful. Pile of tin. मुझे लगा वो हमें वो मारने लगा मुझे। मूनस्टोन। यार हम किस दुनिया में जा रहे हैं, कोई आइडिया है? How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. फोर्टनाइट। हाँ फोर्टनाइट खेली है ब्रो मैंने, चेक करो वहां पर मैंने स्ट्रीम्स वगैरह भी अपलोड किए हैं। फोर्टनाइट इज अ गुड यार, फोर्टनाइट जैसी तो नहीं है कोई भी। Levioso! फोर्टनाइट है। Accio! अभी क्या करना चाहिए मुझे? FPS कितने आते हैं ब्रो? FPS तो अच्छे खासे आ जाते हैं। FPS मैंने हाई सेटिंग्स के ऊपर खेलनी है, मुझे आ जाते हैं 60 40 इतने आ जाते हैं।
सुकून से गेमिंग कर सकता हूँ। Accio! Levioso! नहीं यार, इधर तो मुझे जा नहीं हो रहा। अगर आप उनकी रिकमेंडेड रिसोर्सेज पे खेलते हो तो भाई आपको 40 से 60 FPS I hope that house elf can find us in here. मिल जाते हैं। Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. सेटिंग की वीडियो अपलोड करना। The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. चेक करो किस तरह के 144p के ऊपर कर रहा हूँ और साथ में मैं गेम भी खेल रहा हूँ। इसके मैं ग्राफिक्स करता हूँ ना, है क्वालिटी वगैरह। मेरे ख्याल से वो आ गया है। आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। हाँ ना ब्रदर, इसके लिए बड़ी मेहनत पापड़ बेले मैंने। पहले मेरी स्ट्रीम की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। यकीन मानो बहुत पापड़ बेलने के बाद इस तरह की क्वालिटी है, लेकिन मैं अपना जितना भी है It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Uses. I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. आपकी वाली सेटिंग की वीडियो अपलोड करना बाद मेहरबानी होगी इंशाल्लाह ब्रो। मैं पक्का, मैं रोज़े है, रोज़े में झूठ नहीं बोल रहा। बाकी मैं कोशिश पूरी करूँगा अपलोड करने की। पक्के वाली वीडियो अपलोड करूँगा, सही है। मुझे
आज का Very या कल good. का टाइम दो। When conjuring more परसों जरूर complex आ objects, जाएगी। you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. सारी fake video upload Can I regain कर- resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. मैं कौन सी मैंने Quite fake video upload perceptive. की है? Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already others used हैं, वो to study upload magical करते plants हैं। and brew potions in class. Fake conjuring and potting table. Okay. कलर बताओ। मैं आपकी वीडियो नहीं कह रहा हूँ। अच्छा अदर्स। आप बहुत अच्छे हो यार। ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छे तो हैं। ये है कि जो किसी को जरूरत है वो चीज तो बना के देंगे ना, हम करके देंगे। यार कौन सा बनाना है अभी मैं? अच्छा जी ये कौन सा है? पोजीशन पहले वाले कर देते हैं। जान दो। यहाँ पे इसको बाहर जाते हैं। दूसरा whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. यार ये तो बड़ा खतरनाक है। क्या क्या बनवाई जा रही है प्रोफेसर वेजली? खैर नहीं लगती है। प्रोफेसर वेजली क्या करवा रही हो यार? मरवाना है मुझे? ये किधर गायब हो गई? आपके पास रैम कितनी है? यार मेरे पास 16 GB रैम लगी हुई है ना इस टाइम, जो मैं भी इस टाइम यूज कर रहा हूँ।
Deke will be here to answer any questions you may have. अभी जो मेरे पास Do मेरे not पीसी के अंदर जो रैम लगी है ना वो underestimate his 16 GB है एंड भाई आपके सामने ही है थैंक यू प्रोफेसर I will be भाई sure to बहुत speak है with Deke if I need anything. मेरे Thank you. पास Good 8 luck. GB है यार मेरे I पास shall जिसे linger कहते a हैं bit वो है longer in दूसरी case you'd like to learn another transfiguration heatsink वाली spell for है। use in the room. ये है कि एक हीटसिंक वाली लगी है एक दूसरी सिंपल वाली लगी है जो ग्रीन वाली होती है वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। नहीं प्रोफेसर वेदली बस बहुत यार मजाक चल रहा है। प्रोफेसर वेदली तो अपने काम निकलवाने पर लगी हुई है। ओपन द रिक्वायरमेंट यार हीट सिंक में क्या फायदा है यार। हीट सिंक का फायदा पता है क्या होता है? हीट सिंक का ये फायदा होता है आप नॉन स्टॉप गेमिंग वगैरह कर सकते हो। ये है कि आपकी लैगिंग वगैरह इतनी ज़्यादा गेम नहीं होगी। ये है कि आपकी जितनी आपकी है जितने 16 गीगाहर्ट्ज़ की अगर तो आपको 16 गीगाहर्ट्ज़ ही परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप हीट सिंक के बगैर लेते हो जो ग्रीन की है अगर 16 गीगाहर्ट्ज़ की आपकी रैम लगी हुई ना आपको वो 14 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड देगी। ये नहीं कि आपको पूरी 16 गीगाहर्ट्ज़ की देगी। अब ये होता है Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects. Revelio. Once you've completed a few Wingardium prerequisite Leviosa. tasks, do see me after class. अच्छा जी हमें प्रोफेसर पता नहीं ग्रेकली ने क्या है विंगार्डियम लेवियोसा से मुराद है कि हमने कोई पता नहीं कौन सा जादू इस्तेमाल करने किस जगह पे। अब मुझे कोई समझ नहीं लगी है। इसकी सेटिंग हम थोड़ी सी और हाई कर देते हैं। प्राइस क्या है यार? इसके प्राइस 55,000 से 6,000 तक के हैं। जब मैंने ली थी तब इसके प्राइसेस इतने थे। अभी भी इसके इतने ही हैं। रैम्स वगैरह के इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। जो DDR4 में है ना उसके प्राइसेस वगैरह हाई हैं और DDR5 के अंदर DDR3 के 4 के भी वेल यार इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं। आपको मिल जाएगी स्कून से 55 या 6,000 5500 और 6,000 के अंदर यार परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। वीसेंक भी ऑन है और लेटेंसी बूस्ट ऑन किया हुआ है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हाई के ऊपर भी यार 54 इज नॉट बैड। अगर मैं वीसिंक ऑफ करता हूँ ना 16 GB रैम कितने की होगी यार? समथिंग 14 या 16,000 तक आपको मिल जाएगी। कितने की मिल जाएगी? 14,000 या क्योंकि यार अभी प्राइजेस हाई हैं दिन ब दिन हाई होते हैं। मैं कंफर्म नहीं कह सकता 14,000 या 16,000 या उससे कम भी हो सकती है। आपको मे बी 10,000 की मिल जाए। I was hoping to see Professor you. Fig. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did.
And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. ये क्या बोल रहा है भाई? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मैं कैसे उसकी मैं बताऊँ कि भाई वो क्या बोल रहा है यार? असल में बात ये है, The room is called the Map Chamber, by the way. ठीक है, And the portrait of Percival Rackham awaits us there. ये स्टार्टिंग में ना इनके पास एक चाबी सी होती है, तो यार वो हमला कर देते हैं। How did this Jackdaw get the इनके पीछे एक pages ड्रैगन from the लग जाता book? है और Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. समझ आ रही है? गॉब्लिन के पास, उसके पास यार एक अलग तरह का जादू है, लाइक वो हॉगवर्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना? गॉब्लिन वगैरह कौन सी गेम है यार? हॉगवर्ट लेगेसी है, लेगेसी हॉगवर्ट लेगेसी है ये 2023 के अंदर आई है, हैरी पॉटर वाली है। हाँ हैरी पॉटर की है, समथिंग लगा लो कुछ $60 की है, 60 या $100। ये मैंने उसका लो वाला वर्जन लिया हुआ, समझा करो बात। Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits about you. ये चेक करो ना, ये चेक करो, हैरी पॉटर। To think it was beneath us all this time. हाँ ना, जबरदस्त। माय फेवरेट मूवी यार, फेवरेट मूवी मैं कहता हूँ। तो स्टार्टिंग में गेम की स्टोरी को समझेगा ना, तूने कहना यार क्या एक दफा फाइट बस मजे की आई है। एंड अभी सेकंड आ रही है वो रैगरोक पे है, वो है गॉब्लिन, वो छोटे से नहीं होते हैं जो जिसे कहते हैं, वो होता है बैंक वाले, वो वाला। और ना दुबई में, अभी भी दुबई में है। हाँ देख रहा हूँ, ग्राफिक्स भी अच्छे हैं। हाँ ना, हाई के ऊपर। हाँ दुबई में हो बाबे, मैंने तुम्हें एक काम बोला था, तुमने वो किया ही नहीं है। अब भाग जी, सही है, भाग जी, अभी भाग जी। The Forbidden Forest, and of course, Hogwarts. It's magnificent. हाँ याद है, लेकिन गया ही नहीं हूँ जानी। चल कोई नहीं, खैर जानी। यार मैं भी वैसे अब दुबई, मेरा भी फुल प्लान बन गया है आने का। तेरा मदरबोर्ड और एक बंदे का ग्राफिक कार्ड। हाँ मेरा मदरबोर्ड, मेरा प्रोसेसर भी पता कर ली फिर। Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Like कर देना स्ट्रीम को। जो भी 4 की वाचिंग आ रही है, प्लीज काइंडली से एक दफा लाइक कर दो सारे। I do. You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room,
None of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only. Shall we have a look? थोड़ी बहुत जो समझ तेरे भाई को इंग्लिश की लगती है ना, लाइक स्टोरी की थोड़ी बहुत समझ आती है, वो भी नहीं आ रही। जहाँ से जो इंग्लिश की समझ आती है भाई, उससे फिर हम स्टोरी वगैरह को एडजस्ट कर लेते हैं, और कोई भी पूछता है जी क्या स्टोरी है, फिर हम उसको बताते हैं। I believe I have. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. कब से बक कर रहा है ये, बस यार क्या कर सकते हैं, अब इनकी बक भी तो सुननी पड़ेगी ना। अगर मैं ये थोड़ी बहुत स्किप मैंने की है ना, अब ये है कि ये हमारे प्रोफेसर फिग मेंटोर हैं हमारे। It's time you learned, Glacius, the freezing spell. मैश भाई क्या हो गया, हंसी जा रहे हो, हंसी जा रहे हो। I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. और बताओ, और कोई नई गेम वगैरह आ रही हो, हम वो भी खरीद लेंगे। द लास्ट ऑफ अस भी खरीदी है आपके भाई ने ना, यू नो दैट। ये क्या था? नाइट बोर्ड ने आपको टाइम आउट दे दिया है यार, गलत सीन है। नाइट हेलो, आवाज आ रही है? ये मैंने कहा मेरा कसूर नहीं है, नाइट बोर्ड का है। नाइट बोर्ड ने जो भी किया है आपके साथ किया है। मैश भैया, ये कुछ ज्यादा ही नहीं दूर है। वर्ल्ड मैप, फास्ट ट्रैवलिंग करके जाते हैं ना।
भाई तूने उसको स्पैमिंग की वजह से पता नहीं क्या किया अभी इसने, अल्लाह ही जानता है। नाइट बोर्ड वगैरह Lumos. Protego. Lumos. काम तो बड़ा ज़्यादा खराब हुआ पड़ा यहाँ पे। Protego. Confringo. अबे मैंने एक ही चीज दो दफा लगाई हुई है। Expelliarmus. Confringo. Lumos. Incendio! Reducto! Confringo! Expelliarmus! Accio! Incendio! Confringo! Accio! Reducto! You'll feel damage! And stay down! Confringo! You're the ones who ought to be skinned alive. यार ये मेरी औकात से बाहर है। Lumos! Confringo! Expelliarmus! भाई मेरी हेल्थ आगे कम है। Confringo! Accio! Expelliarmus! Accio! Confringo! Someone's going to regret. Lumos! A fan.
अबे नहीं है Confringo! Expelling... Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Accio! Confringo! There's a victory that came none too soon. Ugh. Expelliarmus! Confringo! Accio! Expelliarmus! Protego! Stupid one! Confringo! मुझे पता था मुझसे नहीं संभाला जाएगा क्योंकि इनके लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। कहाँ मैं मकड़ियों के मुंह लग गया यार। Revelio. Confringo. यार क्या हाँ मैं मकड़ियों के मुंह लग गया हूँ। Confringo. Confringo. Danos. You can feed a beast or it can feed you, if you get my meaning. अजीब ही दो आए हैं ये। चलो ये तो माना है। Over here. प्रोफेसर फिग आप तो कुछ छू मंत्र हो के आ गए हैं। साढ़े पकोड़े जिन्हें लग गए। We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal.
No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I deserve better than patrol duty. Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. ले भाई मजेदार हो गया ये तो. Where is Professor Fish? Revelio. Well, there must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. There must be something here. Ramrock said so. Afraid to fight! अब आया ना मजा. Ramrock said so. Revelio. Petrificus Totalis. Someone there? Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Revelio. I will draw blood. Protego. Fringo! Why don't you come up here and fight me? You are postponing the inevitable. Little magic tricks don't distract me. I won't. Expelliarmus. Are you Confringo. Expelliarmus. Better to the jar. The goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Yeah, this is different. Oh, I'm glad that's over. Let's head inside. Looks like we found the entrance. It's locked. Luma. An unlocking charm. Revelio. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle.
I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Lumos. The first trial. Trial. I. Lummy. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. क्यों ना हम अल्ट्रा कर लें? अल्ट्रा
That must have done something. Best have a look around. More traces of ancient magic. Something must be different. ये क्या हो रहा है? मुझे तो नहीं, वो वाकई में कुछ समझ नहीं लग रही है वो क्या रहा है। Revelio. These are never a welcome sight. ओ तेरी। At least I know what to expect this time. Expelliarmus. Accio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Accio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. ओ भाई। Confringo. Accio. These look familiar. Complete. Expelliarmus. Accio.
statues. Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Accio! Expelliarmus! Confringo! Not making this easy on me. Accio! Expelliarmus! Accio! Accio! Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. करते हैं हम Expelliarmus! Accio! I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Accio! Expelliarmus! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! So that's it.
I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! I'll never get used to these floors. Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Accio! Protego! Confringo! Expelliarmus! यार ये भैन जी से निक्के जो आ गए हैं ना ये काम खराब करते हैं। अगर तो जर्नी दोबारा से स्टार्ट हुई ना, अरे भाई मेरी तो आगे बस हो गई है। I'll never get used to these floors. Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Protego! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Accio! Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Accio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Accio!
Confringo! Expelliarmus! Accio! Revelio. Revelio कोई है माइकल लाल रोकने वाला हमें Accio. Oh shit. Expelliarmus! Accio! Expelliarmus! Accio! बड़ा खतरनाक है यार ये तो अबे नहीं यार Expelliarmus! Accio! एक तो जा तो बड़ा खतरनाक है यार प्लीज काइंडली से जो भी देख रहे हैं एक दफा लाइक कर दे लाइक कर दो मेहरबानी करके यार ये एक मिशन पूरा करके हमने चले जाना है Don't like the look of this. नहीं यार Confringo! Accio! Protego! मेरी तो हेल्थ भी कम है Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Accio! Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Protego! Expelliarmus! Confringo! Accio! Confringo! Accio! Expelliarmus!
Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Expelliarmus. बेटा मैं तो गया Accio. Confringo. Expelliarmus. Protego. बेटा तेरा भाई तो गया Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Accio. Confringo. Expelliarmus. लानत पेन इसके ऊपर कोई क्या फायदा Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. योर जर्नी है यार नहीं करो हाय यार चलो गाइस नहीं तो बस हो गया आई होप तुम लोगों को ये वाली स्ट्रीम वगैरह अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है इफ यू लाइक दिस स्ट्रीम गिव योर थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में दुआ में याद रखना टेक केयर बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहना क्योंकि यार अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगी क्योंकि यार मुझे नींद इंतहाई की ज़्यादा आ रही है ना मिलते हैं फिर ओके बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज